Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the complete course on Medieval Indian History. Medieval Indian History के complete course में आप सभी का स्वागत है. This is the introduction video of chapter 2 Delhi Sultanate. ये इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारे दूसरे चैप्टर दिल्ली सल्तनत का. तो आइए देखते हैं कि इस छोटे से वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं. So let us try to see what we are going to learn in this short video. This is about me. I'm Abhijit Singh Arora and I have already told you about me in the previous video, so let's proceed. All right. So in this complete video series of Delhi Sultanate, which is again a sub-part of the medieval Indian history, we'll try to understand what was the overall political structure or political history of Delhi Sultanate. And then we'll look at slave dynasty, which was also known as Mamluk dynasty. Why it was known as Mamluk dynasty? When we'll talk about slave dynasty, we'll look into this. And under the slave dynasty, we'll look at the various rulers, important rulers, such as Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia, and Balban. And when we'll talk about the Khiljis, we are going to specially talk about Alauddin Khilji. And after that, we'll also discuss about Tughlaqs, in which Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq are important. And after that, we'll also look at Sayyids and Lodhis. हमारी ये जो वीडियो सीरीज है दिल्ली सल्तनत की, जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, उसमें हम लोग एक भूमिका तैयार करेंगे और ये समझेंगे कि पूरी दिल्ली सल्तनत में किन किन राजाओं ने अपना शासन किया था, किन किन डायनेस्टीज ने अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया था. जैसे हम यहाँ पर ममलूक डायनेस्टी को भी पढ़ेंगे, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, इन सब की हम बात करेंगे. फिर हम खिलजीस की बात करेंगे, फिर तुगलक की बात करेंगे और अंत में हम सैयद्स और लोधीस की भी बात करेंगे. अब ये जो पहला वीडियो है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा या ओवरव्यू मिलेगा. इन दिस फर्स्ट वीडियो यू गाइज विल गेट एन आइडिया और ओवरव्यू एंड यू गाइज विल बी एबल टू स्ट्रक्चर और माइंड मैप दी दिल्ली सल्तनत. आप लोग एक स्ट्रक्चर बना पाएंगे कि अच्छा दिल्ली सल्तनत में पहले ये हुआ था, आप क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे. एंड देन इन दी नेक्स्ट वीडियो एक्सक्लूसिवली विल डील विद दी स्लेव डायनेस्टी. जो अगला दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरे तरीके से स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीटली डील विद द स्लेव डायनेस्टी, इन विच विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑल द later slave dynasty rulers or Mamluk dynasty rulers. Then this is something that we are going to cover in the third video. Tughlaqs, both of these sections would be covered in the fourth video. And then in the fifth video, we are going to talk about Sayyids and Lodhis. पांचवें वीडियो में हम लोग Sayyids और Lodhis की बात करेंगे. All right. So let me give you first of all a quick introduction about the Delhi Sultanate. So as we all know that the Muslims were invading into India, and during the time of Mahmud of Ghazni, Muhammad Ghori, it had a far-reaching economical impact also on our country. So when Muhammad Ghori died, so after that what happened was his slave Qutbuddin Aibak, he established his own empire in Delhi. And from there, we started calling it up as Delhi Sultanate. And one more thing was, as Qutbuddin Aibak was a slave, and that is why this first dynasty would also be called as slave dynasty, which begins from 1206 AD. Now, as I already told you, under this Delhi Sultanate or Delhi Sultanate, we'll talk about slave, Khilji, Tughlaq, Sayyids and Lodhis. So this is going to be the chronology, and with time you guys will automatically start remembering. There's no need to mug it up. It's because automatically when you watch the video 2 to 3 times, you understand what is going on and what is the sequence of events, what led to this situation, and then what will be the possible outcome. All right. Now remember one thing, guys. In this Delhi Sultanate, they not just extended their rule confining to North India, but they also started penetrating down in the South India or into the Deccan as well. Now it is quite obvious
when a new ruler who has come from foreign would suddenly start ruling over course of period, obviously on the entire nation. It is going to have a lot of impact on the society, on the religious beliefs, in the administration, in the cultural life, and so on. अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी, इनके भारत पर आक्रमण करने से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी ही कमजोर हो गई थी। और मोहम्मद गोरी के जो नौकरशाह या उनके जो आर्मी के कमांडर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली पर से उन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया। और जब मोहम्मद गोरी का इंतकाल हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते हैं और दिल्ली से अपना एक अलग साम्राज्य शुरू करते हैं 1206 से। अब एक महत्वपूर्ण बात जो ये है वो ये कि वो एक नौकर थे मोहम्मद गोरी के, इसीलिए इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। ममलूक शब्द का मतलब ही नौकर होता है। ये बात हम आगे भी करेंगे जब हम लोग अलग से स्लेव डायनेस्टी को या ममलूक डायनेस्टी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये वो डायनेस्टीज हैं जिसके मैंने बात की जो हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। एक गौर करने वाली बात यह है कि ना सिर्फ हमारे उत्तर भारत से बल्कि दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। और ये आपको आगे की वीडियोस में जब हम उनकी इकोनॉमिक्स और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने हमारे देश पर शासन किया वो भी इतने लंबे साल तक, लगभग 300 सालों तक इनका शासन था। और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य भी स्थापित होगा जब पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर अपना वर्चस्व कायम करेंगे। तो बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज में भी कुछ बदलाव आएंगे, प्रशासन की तरीकों में भी बदलाव आएंगे, आपको कल्चर में भी काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। नई नई आपको बिल्डिंग्स जो है मुगल साम्राज्य की वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हमको इस दिल्ली सल्तनत की वीडियो सीरीज में समझ में आएंगी। नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लें, वरना आगे फिर आप लोगों के लिए ये सीक्वेंस समझना या क्रोनोलॉजी समझना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्ले a lot of attention over here, understand this chronology, or else later on it will become little difficult for you to understand the sequence of events, and then later on you will have to mug it up, and it's never advisable to mug up things when you always have an option to understand the concept and the chronology. If I talk about the Delhi Sultanate, first of all, Tomars were ruling. सबसे पहले तोमर राज करते थे दिल्ली सल्तनत से। One important ruler was अनंगा पाला, और इन्हीं को अनंगा तोमर नाम से भी जाना जाता था। Now, this year what is mentioned over here, this is incorrect. So this has to be 1051 to 1081। और इन्होंने ही दिल्ली को establish किया था। So if ever it will never ever be asked in civil services, but let's say if you are appearing in any other exam such as SSC CGL or some other exam or state service exam, so over there it might be asked that who founded Delhi. So the right answer is Anangapala or Ananda Tomar. Now after that the Chauhan started ruling, and this is something we had already discussed in the previous videos also. पिछले वीडियो में भी हमने इसकी बात की थी 1191 एंड 1192। इस समय बैटल ऑफ तैरेन होता है, इसकी बात हमने पिछले वीडियोस में की थी। सो द चौहान्स वेयर द एक्चुअल वन हु फेस द ऑनस्लॉट ड्यूरिंग दिस मुस्लिम इन्वेजन। तो मुस्लिम का जब इन्वेजन होता है तो ये चौहान्स हमारे फ्रंटियर की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, नाउ आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट establishment in this Delhi Empire from the foreigners, so it was done by Kutubuddin Aibak. So when I am talking about the early Turkish ruler, I am talking about the slave dynasty. मैं slave dynasty की बात कर रहा हूँ, और ये उनका कार्यकाल है। This is the time frame 1206 to 1219. So this is not alone for Kutubuddin Aibak obviously, and then Balban, रजिया, all other सबका टाइम फ्रेम इंक्लूडेड है इसमें। आफ्टर दैट फ्रॉम 1290 till 1320 the Khilji started ruling, which again we'll be discussing. खिलजीज के बाद तुगलक आते हैं, which ruled from 1320 to 1414, and after that came Sayyids, और सैयद के बाद from 1451 to 1526 came the Lodhis.
एंड मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड। एक बार तो ये केबीसी के सवाल में भी पूछ लिया था, नॉट जस्ट इन एसएससी सीजीएल और बैंक एग्जाम्स, दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी और हु वाज द लास्ट prominent ruler of Lodi dynasty. So ये ऐसे कई सवाल पूछते हैं, because after this the Mughal Empire would take control. जो ये जो तुर्क के जो ये रूलर्स हैं, इसके बाद फिर हमारा मुगल एम्पायर आ जाएगा। मुगल एम्पायर कहाँ से थे, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सो जस्ट कीप अ पिक्चर ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को अपने दिमाग में रख लें। अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे अर्ली तुर्किश रूलर्स के बारे में, यानी कि स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।